Good afternoon, everyone. Here we are back with another live VC for 18th of December 2024. Day stands at Wednesday. Time stands at 2:50 p.m. So let's quickly hover on to our indices. As we saw in the discussion room, in the last 15 minutes of of the market, that is during you can say 16th of December, we initiated some message that we see a frequency of high sellers, not like strong sellers, which can cause some you can say trouble. And now you see exact thing is on the chart, right? So first of all, I would like to start the VC by telling you, see, this is how the market is going to function first. If you ask me why, then this was explained multiple times, I guess, with the help of this particular thing. If you just recall why we have noted this as a reference chart, right? I had posted this yesterday as well, that stick to this particular reference. This has to do something with what we had discussed alongside all the patterns. We were like showing up again and again. So now you see, one thing is for sure that within this particular range, that is 75 percentage of range, that stands at 24,611. Then if we go by, see, we have three ranges overall. To be very specific, just to recollect the same, I will just point that particular thing out for you so that everyone gets on the same page if at all they are not. See, first we have somewhere around 24,000, sorry, 24, this one, 24,611. Okay. This is, I'm talking about the green side. I will mark this with a uh, up arrow. This is our custom range reference, which is going to be a reference till we achieve either of the, you can say, targets on the upper side or on the lower. Okay. Until that, this particular range is very, very, very active for Nifty. Second is, if you remember, it will be dynamic as and when the week changes. So as per our basic, you can say weekly pivot extensions, that particular 75-ish level comes out to be, if I'm not wrong, 24,717. Just check it alongside. ऐसा ही कुछ level है. And then third level, the most crucial level stands. The number which I told you to remember was 24466. Now, this number happens to be our yearly H4 players. All these three numbers are very crucial for any upside which we are looking inside the market. Sorry. And now, then now when you know this particular three numbers, one number comes which is like for a longer term trigger, that is 24830. Now, if you remember this particular level, this happens to be somewhere around monthly H4 as well. And also, if you see, we have a longer term trigger here. Breaking this figure itself, you will observe everything going on in a perfect sync with the, you can say, market as such. Also with the buying patterns of FIIs and DIs all as well. Now, coming back to the downside. So downside में तो it's very very open. We are not yet down. So basically आपका ये level is crucial. Okay. Until we are in this particular range, जैसे कि आपने reference chart पे भी देखा हुआ है, हम इसी में कहीं ना कहीं खेलते रहे. That is what you see, right? The moment you saw this particular thing up, again we were pushed down, pushed down to the same you can say range of lower range of 24,120. Breaking this further, it will increase that particular issue, right? And then we can hope for a reversal from somewhere around this particular level, 23,630. But that is very far-fetched thing. First, we will see how indices are reacting to this particular thing as well. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, that carries a particular importance. You will understand how we saw the trigger, how we were able to capitalize the move, because everything changed within like in a fraction of seconds.
I will tell you how, right? So I hope this thing is very, very clear. Now, when we are clear about this particular thing, let's switch back to 30 minutes. Okay, 30 minutes पे वापस switch back करेंगे. Done. 1 minute. Yeah, done. So let's switch back to 30. And you remember I sent one more chart which just got triggered. That was basically what the thing और कैसा पिक्चर आपको चार्ट पे इनिशियलाइज करने का आपको एक प्रोसेस समझ आए या आई कैन से हाउ यू हैव टू विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर सेम थिंग ऑन द चार्ट. One thing, if you see, this was the chart which I had mentioned in the reference chart for yesterday as well. This was the exact area which we were seeing that somewhere around 24,330 के इधर लगभग कहीं halt मिलना चाहिए, right? If you see the pattern, basic pattern, एक पैटर्न आप देखेंगे जब भी निफ्टी 5, yeah. So here if you see, whenever nifty, we do not need this, for instance, ignore this please. Okay, day in day out, whenever nifty was trying to like pertain to a specific level, or you can say sustain basically on a specific level, some push was coming from you can say a particular player, which we'll understand in depth in this particular session, so that you get an idea that how things are flowing across as well. But before that, if you just observe one pattern here, that is for yesterday. So yesterday, mein, this is the one which we are looking at. Okay. One thing to be very very specific here is, अब देखिए, this is a drop, this is a rise, this is a drop, further drop, this comes a rise, this goes for a further drop. Okay. Now, if you check the, you can say upside movements here. What I want to tell you here is, no, we do not require this. We require this. Okay, somewhere here down the line from here. Okay, it's a 120 points का कुछ आपको एक upside दिख रहा होगा. We come down till here and then measure it from here as well. ये इधर है कहीं पे. So 100 points here as well. Then if you come to this part as well, let's check because this is again down and continue, right? इधर से हम ऊपर एक बार check करते हैं. Somewhere here, it is also like quite 110, 120 ish. एक पैटर्न अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, whenever the index is trying to go down, okay, sorry, whenever the index is trying to go up, it is retracing back for 100 points and then falling back below its previous, you can say, made low by a fraction of, let's say, 30, 40 points. This is irrelevant to like state as well, but this is just a pattern which I was going through or which I was following, which is why you see my message was first it was a range that we discussed, that is 24,000. I guess what was the range? I forgot. Take to 330 tha, and I guess second would be somewhere around 355. If, no, okay, what was that? Yeah, you just check discussion. No. Yeah, see, so it was 24,330 and 24,355. Correct. अब उसका एक रीजन था. First of all, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. Second message which came below that was, yep, it's the YH4 players. Let's see if we close below them. Why I was telling, this is the exact, you can say, pattern and reason why I was stating that particular thing. Now, if I mark one level, okay, that is 24,000, 24466. Okay, 24466 किधर आ रहा है? Somewhere here. Now just keep on observing what I'm trying to tell you. इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देंगे. This black line. Do not need this. And then we will pick one more, you can say, level, that is 24,330. 24,330, somewhere here. Correct. Now this was the exact areas where we were trying to drop out, drop in as well. Ab, looking at this particular pattern, na,
First, either say why I told you, let's see if we close below this or above this particular level was just because of these particular patterns of pullbacks of 100. मीन्स जब भी मार्केट मार्केट छोड़ो, जब भी निफ्टी एक लो बना रहा है, डेज लो बना रहा है, उसके बाद वो एक रीटेस्ट जरूर मार रहा है ऑफ अराउंड 100-120 पॉइंट्स. दैट इज व्हाट आई वाज सीइंग ऑन द चार्ट इटसेल्फ. बट इफ यू boil down to this particular range, that is 24,330, okay, to 24,330, 355. बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इधर कहीं से भी इफ दिस इज माय 335 इश लेवल, ठीक है, ये अपर अपर रेंज है, ये देखो. तो ये रेंज से भी अगर आप देखेंगे पुल बैक आया है समवेयर अराउंड 106. इसको अगर मैं थोड़ा और नीचे ले जाऊं, इट कम्स डाउन टू 127, मोर और लेस इन दैट पर्टिकुलर फेयर रेंज ऑफ शेयर इटसेल्फ, राइट. The thing here to denote that particular point is if we are going below that particular level, then it is very clear that again this particular thing was a flush, right? I will tell you why. Just keep on listening to me. Everything will fall into place when you combine all the pointers at the end, right? So this was the case, very case here. Coming to the next point, अगर हम इसको flush बोल रहे हैं, I will just keep on marking it. If we are calling this as a flush means basically a flush. अगर आपको simple layman's language में बताऊं तो flush is something which is not, you can say, ideal or which is not very true to the scenario which we are seeing. मतलब ये actual buying नहीं होगी. This might be just short getting triggered. आप समझ रहे हैं, जिन जिन ने शॉर्ट किया होगा उनका एक या दो कैंडल में सारे शॉर्ट्स ट्रिगर हुए होंगे एंड दैट शॉर्ट कवरिंग माइट हैव टेकन दैट पर्टिकुलर थिंग फॉरवर्ड फॉर यू. So there is a difference. This is, we have touched down on this particular topic. You can say in many VCs as well, right? We in broader time frame, in weekly time frame as well, where we saw the difference. What happens when a SC moves occur and what happens when a long build-up moves occur. Both are having the same purpose, same direction, but yet very different routes in terms of intensity, and that is what you have to understand. So let's assume this is a flush up till now. Okay. Now let's verify if we are right on that particular track or we are digressing from the core, you can say, trend of the market. So let's see that. I hope ये सब आपको clear है, तो इन सबको फटाफट से हम हटा देंगे. All these are not required right now. See, have a look. Now, what will come into my broader picture would be these particular levels. What I will do is I will just go on my daily time frame quickly to mark my levels and just put across my pivot extension for this particular range, which we had marked as a reference range. Okay, and let's quickly come down to 30 for a simpler analysis, obviously. So अब आप देखिए, एक चीज आपको मैं अब दिखाना शुरू करूं. One thing which was at this particular thing, break of GPZ. Although it was not a proper break, but if you go by a proper, you can say, terms, and ये तो daily है, इसको हम weekly पे आते हैं. Remember the message below, just below what we had talked about, that if Nifty is going below or opening on a gap down thing on 17th of December, then also we will have a good cushion for the fall to just cushion off first and then continue with the same intensity. Although these intensified sellers were very very strong, that was being indicated in the last, you can say, 15 or 20 minutes of the market. Last में ये लोग आए हैं. It is not that दिन में बैठे हुए हैं, second half में एकदम last में they just, like बोल सकते हैं ना, they just pushed the accelerator. So that is what was seen here. Now one thing was, if we break this particular thing, देखिए होता क्या है ना, multiple factors which made me go retro in my perspective was, first, when I saw this particular pattern. See, this one, and then this one. Okay.
Again, I'm telling you, be very attentive for the next 5 to 10 minutes. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे अभी कुछ होते हुए, राइट? ये आप पैटर्न याद रखिए, ठीक है? एंड इसके बाद वी सी अ रिजेक्शन समवेयर फ्रॉम योर, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअल में योर जीपीजेड, वीकली जीपीजेड. इसको अगर भागना होता, दिस मोस्टली वुड हैव टेस्टेड द हाई फर्स्ट. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है. अगर आप देखेंगे, whenever market is trying to recover back in the second half, trying to signify that the sellers which entered in the first half, or if there is a consolidation in the first half, then most of the times you will see an ORB breakout first. Second, you will see day highs being tested. उसके बाद वो नीचे बंद हो जाए, that doesn't matter, but days high को एक एक बार तो टेस्ट किया जाएगा. And third condition में क्या होता है? If we are having these kind of scenarios, like these kind of intensified move with a cherry on cake like situation which happens to be OH or OL. अगर आपके पास ओपन इक्वल्स टू हाई या ओपन इक्वल्स टू लो की कंडीशन है, तो ये एक चेरी ऑन द केक आपको ऐड करके देगा ही देगा. बिकॉज no matter what, market will go to test that particular thing most of the time to clear out all the, you can say, liquidity grabs it is willing to like absorb, or it is willing to give away to the weaker hands. Not again, this topic is not of any relevance. It is just to support our particular, you can say, discussion. Coming back to our pivot discussion, एक ये चीज देखिए. Why I was stringent in firstly deliberating that this particular move can be cushioned, but yet these sellers are very strong, was first rejection from here. But what made me go like on a much more deeper side onto like retrospecting that this particular thing can go down on the next day is this thing. ये पैटर्न जैसे मैंने बोला ध्यान में रखिए. अब देखो बैंक में, what do you see? Tell me. What can you see in the on the chart? बताओ. I'm audible, right? Friday alpha is broken. Hmm. Do you see this particular pattern in formation? एक minute. Do you see this particular pattern in formation? W. And then we stopped here, right? Now, if this is not, you can say if this is like a, you can say mock or something like that. Let's move on further. Do you some, do you see something like this? This happened to follow. देखिए मैंने इसलिए पब्लिक चैनल पे भी एक पोस्ट डाली थी फॉर ऑल दी मेजर इंडाइसेस दैट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मार्केट आर इन सिंक. ये पब्लिक चैनल के लिए तो हो सकता है, बट हमने ये काफी पहले से डिस्कशन में ये चीज डिस्कस की हुई है, राइट? बट अगर आप देखिए, मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट था जो अकेला MH4 के ऊपर था, बट इट ऑल्सो फॉलोड द सेम. ये देखो, दिस ट्राइड टू सस्टेन बट इट वाज नॉट एबल टू. You see the perspective again here. If this is not enough, let's move to Fin50. See this, again the same thing. Even if this is not enough, let's move to Sensex. All of them showing the similar patterns. And this is what I had gauged in. Okay, this thing can form something like a, you can say, a pattern और a double top pattern basically. उसके reasons क्या थे? आप बोलेंगे कि how can you say that this was about to be like a double top pattern because already formed हो चुका है. There were some reasons to it because of which I just hurriedly messaged. थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ like at the last minute of the market because
I was just confirming that अगर कुछ ऐसा हो रहा है then the information should go right. So for that confirmation, what I did was I came back and I checked. इसलिए अगर आपको भी याद होगा, we talked about a flush here, right? This thing, is this a flush or not? What I did to check it was I just opened up my fund flux. When I opened my fund flux, one thing which I saw in this particular scenario was last week. इसकी जरूरत नहीं है अभी, या रख लो चलो, ठीक है। वीक ऑन वीक अगर हम कंपेयर करें तो अब इस वीक में देखो क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस वी डू नॉट नीड दिस और 1 hour 30 minutes, ओके। अंडरस्टैंड नाउ दिस थिंग। ये देखो, at this particular juncture, okay, I see after this particular gap up, you see a particular, you can say, mother range happening, and then some kind of pattern which you can observe is, I don't know with naked eye, that is what I keep on saying. चार्ट देखते अगर आपको 2 मिनट में अगर आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो, दैट्स योर थिंग। नाउ सी व्हाट आई सॉ, not this thing. See, first of all, this is a good mother candle, okay। मदर कैंडल में हो क्या रहा है, हैव अ लुक। फर्स्ट, my fund flux gives me a confirmation that a strong set of hands are present here. And why I can say that at this particular candle, ये दो कैंडल को हम पकड़ेंगे, at this particular candle, and why can I say that? I can say that because my flux first is on the downside. Second, if I go and check my volume spike, it gives 3x on daily, 2x on weekly, one almost 2x on monthly. ठीक है, वापस से सुनो, it gives me 3x on daily, 2x on weekly, and almost 2x on monthly. So this cannot be ignored. It, वैसे तो आपको by color you should understand कि this is something which is very very strong in nature. Like a broader set of hands are like going to enter in this particular region. Most important thing to understand here is the pattern. Observe. पैटर्न में अगर आप देखेंगे, इधर आप एक चीज देखिए, डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लोजिंग ऑन दी अपर एंड, अगर आप देखेंगे सेलिंग कैंडल है अपर एंड, एंड आप कैंडल का साइज तो देखिए। कैन एनीवन से दैट दिस कैंडल कैरीज दिस मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस? नो, राइट? बिकॉज until and unless you have some like confirmation कि ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, इट्स लाइक a normal candle. No one can even like anticipate that this is going to be so important for the market going forward. Understand what is happening here. Mother candle hai, the opening immediately after this candle, which obviously was down, you see how this opened. This opened with almost a negligible volume spike, sorry. Flux में तो flux का मैं क्यों बात नहीं कर रहा, because flux is almost colorless, so उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं हमें. But if you even see here, minus 81%. After this such strong, you can say, essence of flux, crossing this flux alone would be a task. That is pretty sure. Okay, and then we also have a presence of quarterly players here. What does that mean? That means, चलो इसको हम पार्क करके रखते हैं फिलहाल के लिए, अब बट ये पॉइंट रिमेंबर अपने दिमाग में रखिए, ठीक। क्वार्टरली प्रेजेंस है एट 25 नवंबर, इसको हम वापस से जाके चेक करेंगे, राइट, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। बट जस्ट टू कंप्लीट दिस फास्टर, आप देखिए सेकेंड डे क्या हो रहा है। सेकेंड डे ट्राई टू मूव अप, a very classic pattern on a 30 minutes time frame, which we called as failed auction. Pivot boss में अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आता है अंडर द सब टाइटल ऑफ मनी जोन्स। मनी जोन्स के कोर कॉन्सेप्ट है वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो एंड पीओसीज, जिसके अंदर एक सब टॉपिक आता है फेल्ड ऑक्शन। फेल्ड ऑक्शन, अभी उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। बेसिकली होता क्या है, एक 30 मिनट्स कैंडल को आप मार्क करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल को आप मार्क करते हैं, उसको जर्नली मार्केट बोलती है ओआरबी, ओपनिंग रेंज ब्रेक और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एज।
ठीक है। तो होता क्या है उसमें, जब भी आपका एक फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल के ऊपर या नीचे मार्केट जा रहा है, होगा क्या, इट विल ट्राई टू take a take that particular, you can say, high or low of that particular day with a big candle, or you can say big flux, big volume spike, whatever might be the case. But it will not go up after a certain, you can say, break of high or low. And how can you confirm that? No follow up buying, no follow up selling. इधर आप देखिए सेम चीज हो रही है, नो फॉलो अप बाय। एंड आप इधर देखेंगे तो सेम थिंग विच इज हैपनिंग हियर, एम पैटर्न एंड देन द फ्लैश पोस्ट डाउन। कैन यू सी, which is very well indicated here. Huh, although we could have not caught this particular move, ये तो with the day with the day and with the help of your daily pivots, DL4 के नीचे प्राइस जैसे ही जाता है वो आपको बता देता कि yes, this thing is doing some more extension towards the downside. But अगर आप वही चीज इधर आके कंफर्मेशन में देखें, we also have a gap or something like this present here, right? गैप फिल हो सकता है, मे बी गैप फिल करने गया हो, वापस से ऊपर है, and blah blah blah, all sort of that particular theories. Coming back to this point again you see a very decisive level after a gap fill. You see a mother candle. बहुत टाइम में अब इसके बारे में बात कर चुका हूँ. A important zone where you see, or at any crucial level, if you see a mother candle being formed and then being taken out, it's generally a sign of exhaustion. You can take that in that particular form. ठीक है. और ये चीज अभी आप रिपीट होते हुए देखोगे. So keep these particular things in mind. You see, ठीक है? A break, a retest, and then up. Then we break up. इधर हुआ क्या है? If now, if you're able to gauge this particular thing in your mind, यही सेम चीज, ये लो और ये हाई को देखो, राइट? इसने किया क्या है, इसने पूरे इस रेंज को टेस्ट किया है, ऑन दी अपर हैंड एज वेल एंड ऑन अ लोअर एंड एज वेल. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या फिर अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स बोलूं, ये एक मिनी ये एक मिनी वर्जन है इस चीज का, of this very thing. See, सेम सिनेरियो आपको एक लोअर टाइम फ्रेम में देखने मिलेगा, जहाँ पे नीचे भी टेस्ट किया गया है और उसके बाद ऊपर जाके भी टेस्ट हुआ. एंड नाउ अगेन इफ यू जस्ट सी, नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर जोन, सॉरी, चेक दिस थिंग. Simple, right? But how you will monetize on this particular, you can say, situation, that is through repetition of these particular things. देखो, इसलिए मैंने कहा कि आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा ना, स्ट्रक्चर, और उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज व्हाट मेक्स योर एनालिसिस स्ट्रॉन्ग. इतना ही सिंपल एनालिसिस है. अगर आपको वो चीज समझ आ रही है ना, दिख रही है चार्ट पे, देन द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट कीप ऑन विद द फॉलोअप्स ऑफ प्राइस, के प्राइस क्या कर रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, राइट? बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर सेंस. नाउ इफ आई मार्क दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन अ वेरी सॉर्टेड मैनर, बिकॉज अब हमें इसका काम आएगा. Yeah, this, and we do not need even this, do not need this, this, and even this. Okay. Now the charts look neat alongside your EA being in the picture as well. But अब थोड़ा और आगे चलते हैं. Let's take things deeper down here. So now this line stands important for me. I will mark this thing with blue, or let's say an orange, and then this also with an orange. And just to like थोड़ा सा सही करने के लिए इसको हम ये लेवल दिखा सकते हैं.
अगर आपको अब याद आ रहा हो, ये लाइन का रेलेवेंस अब आपको समझ आया, वाई आई शोड दीज पर्टिकुलर लाइन्स। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीनेम करके अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या ये चार्ट आपको याद आ रहा है? फेमिलियर, सॉरी, ये चार्ट कहीं देखा देखा लग रहा है आपको? Guys, you are there, right? Do you find relevance of these particular chart? Date is 16th of December. I sent across these charts with the same reference with just one level on the higher side, stating everything hovering around previous 2 week high. Second point was all of them are in sync, waiting for a trigger by MH4. Third was all of them have protected the low of 5th of December. That is a custom range that stands out to be this range, right? And this was 16th का जो भी डे होगा आपका ये। अगर आप अब ट्रिगर देखना चाहो ना, if I just mark the exact candle here, you see what is happening. The thing why I am calling this as a flush was, if you just observe this particular thing took a very big step in terms of a particular break of sellers area and then going up. पैटर्न समझो, इधर से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है विदाउट अ रीटेस्ट, making it something like a virgin zone. Okay, going back again, consolidation, suddenly down, fills it up, goes extremely on the upper end, extreme upper end, right? फेस ऑलमोस्ट 2 वीक्स हाई का आपको इधर रेजिस्टेंस तो दिख ही रहा है। अगर ये ब्रेक होता, MH4 का ट्रिगर साथ में आता, एंड यू वुड जस्ट हैव सीन अपसाइड रैली. What changed the scenario suddenly was this particular three candles. These particular three candles changed the entire scenario for the market. Alongside a very, very common pattern, which you can say double top. And why I was like very much high on this particular note, seeing these particular patterns. वो क्यों, अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ. अब आप एक चीज देखिए, द करंट मंथ ऑफ डिसम्बर, हम फर्दर सब जो हमारा आएगा वो फंड फ्लक्स के थ्रू ही आ रहा है, राइट? अब आप देखिए एक और चीज, माई फर्दर ट्रिगर वॉज ऑन दिस पर्टिकुलर नोट. हैव अ लुक. फर्स्टली आई विल शो यू दिस थिंग. तो पहले इधर आते हैं, ये मुझे एक रेड कैंडल दिख रहा है. दिस इज समथिंग विच इज स्टेटिंग दैट फ्लक्स इज अप, प्राइस इज डाउन. Flux is up, price is down. Either flux is down, price is up. You see how the reaction went. Sellers tried to take control, were not able to dominate. Either they tried to come but failed. Okay, so this was somewhere a major trigger by some weekly or monthly, I guess. Monthly या monthly का तो खैर नहीं होगा, but somewhere around weekly. Yeah, and a major trigger would be coming from definitely your YH4 player. This is the area where YH4 would have flushed that particular price up. होता क्या है, जब भी आप एक बड़े टाइम फ्रेम के आजू बाजू आते हैं, तो द सिनेरियो, हाउ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो बिल्ड्स अप इज, प्राइस हो सकता है किसी ने पहले से एक ऑर्डर बना के उधर रखा हो कि अगर मेरा प्राइस इधर आता है, I might average out at this particular price, or let's say this is my breakout price. I will buy some or the other quantity here, and that orders might get triggered. Okay, all that happens to be an assumption. There is no solid proof in all these assumptions in the market. People try to justify all these particular moves if that thing is happening in reverse of their particular analysis. And that is a good thing, because if there is no assumption, there is no particular theory to believe in.
and market has to build up some theory to justify that particular thing, and that is what you exactly see here happening as well. Correct. Now if I go, but when we talk about pivots and CPR, we are not putting anything extra into the chart. We are just only plotting the things, or you can say we are just organizing the raw form of data through a specified tool, or you can say indicator, which we are using in terms of EA auctions or fund flux, free flow, whatever you can call it. Correct. Now if you have understood this particular point in totality, let's continue with the fund flux further. So this states somewhat of a condition where things are getting triggered. You see again this pattern forming, rally base, drop base rally, a perfect something like a demand kind of area, and then the price going up. ठीक है, ये बेसिकली अगर आप इसको कंबाइन करोगे ना, ये थ्री कैंडल्स को अगर आप कंबाइन कर दो, it forms something like a long hammer like candle. So whenever you see these kind of candles, where मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया हुआ है, कोई भी ऐसा थ्री कैंडल पैटर्न होता है ये, this candle can be anything, second candle can be a doji or a multiple dojis. अगर ये ड्रॉ मतलब ये रेड कैंडल है, डोजीज है, और उसके बाद वापस एक रेड कैंडल बन रहा है, देन इट्स फाइन द इंटेंसिटी इज लाइक going down with more added power. But if it has to reverse में क्या होगा? The third candle means this is the first. बाकी अंदर के जितने होंगे वो सारे बेस कैंडल्स होंगे, डोजी या बेस. बट जो थर्ड कैंडल बनेगा दैट वुड कैरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, बिकॉज वो हो सकता है नीचे खुले ऊपर खुले, डजेंट मैटर, बट उसका जो क्लोज रहेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस वुड बी अबव दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस पर्टिकुलर लाइन. ये इसके ऊपर रहेगा. दैट्स इट. इन तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे ये आपका बन जाता है लॉन्ग हैमर कैंडल. या फिर अगर इसको आप यू कैन से थ्रू पिवट बॉस कैंडल पैटर्न देखना चाहो, देन दिस कैन ऑल्सो बी लाइक अ विक रिवर्सल or at times ERS patterns. At times. Okay, it depends upon how the base candles are. So ERS and VRS, sorry, ERS and WRS can be a form of identification of such kind of movements. I hope आपको simple and plain language में clear है. Correct. तो इस सब को हटा देंगे. And coming back to our particular original discussion here, you see a fill of this particular zone as well, which confirms after this particular flux that whatever sellers were present here were trying to get protected. बस खाली मार्किंग्स पे ध्यान रखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई स्विच बैक टू द डेली टाइम फ्रेम, यू सी हाउ इंस्टेंटली दिस ऑल पर्टिकुलर थिंग्स कनेक्ट. ठीक है, वो पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं इतना जो हम अंदर तक जाके डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन चार्ट विच आई विल शो यू, जो हो सकता है आधे लोगों के सर के ऊपर से चला जाए या फिर किसी को समझ नहीं आया. उस रीजन की वजह से आपको इतना टाइम लेके मैं ये समझा रहा हूँ. राइट, दैट इज द कोर रीजन. नाउ अंडरस्टैंड दिस. दिस थिंग हैज गॉट अ सिग्निफिकेंट पर्पस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फ्लक्स चेक कीजिए. फ्लक्स ओके दिखेगा, 50% स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट हाफ है. बट अगर आप इसका फ्लक्स देखें, फ्लक्स इज डाउन. करेक्ट, इधर आप फ्लक्स देखिए और फिर इधर फ्लक्स देखिए. फ्लक्स इज डाउन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज हैपनिंग, इट इज फॉर्मिंग अ मदर कैंडल. मदर कैंडल फॉर्म कर रहा है 5th of December. This is why I also took a reference of 5th of December. आपको अगर याद होगा, फिफ्थ 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 फिफ्थ, अब मार्केट में फिफ्थ की ही बात किया जा रहा है. राइट, अगर आप ये भी चीज देखेंगे रिवर्सल से ही आ रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर मैं इसको छोटा सा एक वापस से आपको रिकॉल दूं तो आपको समझ आ जाएगा व्हाई वी वर टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस. ये देखो, ये ऑलमोस्ट कहां से भाग रहा है आप देख सकते हैं, 25 इश लेवल से, विच इज ऑलमोस्ट अ रिवर्सल फॉर सेलर्स. ऑलमोस्ट, हालांकि टच नहीं हुआ है, छोटे से एरिया से रहेगा, बट यू कैन सी व्हाई. राइट, यू कैन एग्जैक्टली सी व्हाई.
उधर से आप एक फ्लक्स देख रहे हैं towards 75 bias level, which is not able to sustain, forming a double top pattern. This is what your studies can do for you. Studies and follow-ups can work wonders for you. It's like a no-brainer here, right? Quick, technically a no-brainer. Either the you remember this level now, 24,717, which I added in the you can say in the starting of the VC as well, correct? So all these levels give you these kind of importance only. Now, Abibi, let's like look at two three more points to identify if this was a flux or not. ठीक है? तो अगर आप ये चीज देखें, ये चीज this thing, what I'm saying is this thing and this thing exactly matching, exact moves. और अगर उसको इसी पैटर्न्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये भी एक सिमिलर फैशन का मूव है, ऑलमोस्ट रिपीटेटिव पैटर्न्स, करेक्ट? बट दिस इज नॉट आवर कोर पॉइंट्स हियर. द कोर पॉइंट इज ये 5th of December. This is the candle. Now you see what happens here. I mark a mother range. Okay, where is it? Yeah, yeah. I mark a mother range here. Observe, observe it out. थोड़ा सा रिव्यू करके अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप रिव्यू करके देखें, आपको एक चीज दिखेगी. We breaked down this particular zone from here. We went down. We closed up. हम्म? अगर मैं इसको थ्री थ्री कैंडल्स के फॉर्मेशन में बांट दूं, these three, these three, and these three, what kind of pattern can I get in a sort of amalgamation? Can I call something this pattern to be something like this, right? वो कहाँ से आ रहा है? That also you have a justification for that, right? And now you know why these candles are important. ध्यान से सुनो, मैं फिर से आपको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. अगर आप ये अमालगमेशन देखें, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से ब्रेक ले रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर है. मैक्रो अगर मैं आपको, मैक्रो तो मैंने ऑलरेडी एक रेफरेंस के लिए आपके पास रखा हुआ, राइट? हमने मैक्रो का विप्रो के चार्ट के ऊपर निफ्टी का एक चार्ट भेज रखा फॉर अ रेफरेंस, ब्रॉडर रेफरेंस. वही सेम चीज इधर हो रही है, सेम चीज. मतलब अगर आप एक ब्रॉडर रेंज पकड़ना चाहे ना, तो निफ्टी का एक्चुअल में ब्रॉडर रेंज 1000 पॉइंट्स का है, जहां पे वो टेक्निकली कंसोलिडेट करेगा. बट हमने क्या किया हुआ है, हमने उसी चीज को अपने पिवट एक्सटेंशन के थ्रू ब्रेक कर दिया, जिससे हमें पता चले कि 1000 पॉइंट में बायस आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ बैठती है, सेलर्स आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ बैठती है, कहाँ पे सेलर्स वीक हो सकते हैं, कहाँ पे स्ट्रांग हो सकते हैं, कहाँ पे बायर्स वीक हो सकते हैं, कहाँ पे स्ट्रांग हो सकते हैं, राइट? कौन से ऐसे रेंजेस है जहाँ पे हम कंसोलिडेशन मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से हम मार्केट से एक शेयर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? ऑल दीज थिंग्स आर taken down to a point with the help of our pivot extensions, or to be very specific, custom pivot extensions. I hope I make sense here, correct? Now moving forward, अभी आप देखो, these things are falling into place exactly, and very you can say in a very subtle form of play, correct? And that is why 5th of December stands to be very relevant. कितनी वीसीज होगी जिसमें मैंने इसके बारे में बात की? मल्टीपल वीसीज. एंड एज आई सेड, एज आई कीप ऑन सेइंग, you you can go wrong in your approach, this thing cannot. If this thing is showing something different,
और समथिंग रॉन्ग, देन एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो जाती है कि वी हैव plotted it wrong or we are missing out on something. Just tell me a reason you can deny this particular, you can say, extension, custom extension, and then its reactions with the particular levels which we have been seeing for past 2 months right now. There's nothing to like even take from it or deny from it. Correct? वही चीज आप इधर देख रहे हैं. How beautiful are the reactions? How beautiful are the touches? Uh, Gone by and everything. ये एक चीज हो गई. ठीक है, दिस इज अ माइक्रो स्ट्रक्चर. अब मैक्रो पे चलते हैं. मैक्रो करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ करना नहीं है. अब जो इतना हमने पूरा राम कथा किया है उसको हमें खाली हल्का सा ठीक करना है एंड टाइम फ्रेम चेंज करना है एंड वी आर डन. ये देखो, इसको करना क्या है? वी जस्ट हैव टू स्विच टू दिस पर्टिकुलर थिंग. देखा? व्हाई आई टोल्ड कीप दिस पर्टिकुलर रेंज थिंग टू बी इम्पोर्टेंट. आप देखिए, सेम चीज हो रही है, कुछ अलग नहीं है इसमें. सेम चीज. 6 मंथ्स का एक प्रेजेंस है. अब अगर आपको याद हो, मैंने इधर आपको दिखाया था 25th को. आई टोल्ड क्वार्टरली प्रेजेंस याद रखिए. उसका मैं आपको रेलेवेंस इधर दिखाना है, दिखाता हूँ. ये देखो, वीकली, ये डेली नहीं चाहिए. ये मैंने चार्ट्स में भी मार्क करके भेजा था. क्लस्टर हमने बात की हुई है. बट मोर इम्पोर्टेंट, like much more important to that particular thing is the placement of these particular, you can say, किस तरीके से बोल सकते हैं, the placement of this particular candle, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है समझो. इधर से QL4 के नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपका उधर एक, आप बोल सकते हो, ऑल्दो डेली में एक हायर फ्लक्स आ रहा है, बट अगर आप उसको माइक्रो स्ट्रक्चर में जाके देखो ना, वो फ्लक्स एक्चुअल में जो वो कैंडल का फ्लक्स था वो डाउन साइड था. ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक, आप बोल सकते हो, कॉन्ट्रोडिक्टरी, यू कैन से कॉन्ट्रोडिक्शन मिल रहा होगा इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई यू सी दीस पर्टिकुलर रेंज फॉर्मिंग. हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक कैंडल का रेंज पकड़ा, दैट इज 25th November ऑन 30 minutes. उधर से फिर हमने स्ट्रक्चर्स चेक किया, उधर से एक ORS पैटर्न देखा हमने बनते हुए, विच वॉज टेस्टिंग बोथ द लोअर एंड, दैट इज द गैप फिल ऑन द लोअर एंड, एंड अपर एंड पे जाके वो अपना मंथली H4 के आजू बाजू जाके रुक गया. इट वॉज नॉट ट्राइंग टू ट्रिगर अबव. होता क्या है, उधर से 2 वीक का रेजिस्टेंस बनता है, और आप वही चीज इधर भी होते हुए देख रहे हो. वो सेम चीज अब एक मैक्रो स्ट्रक्चर पे दिखती है. सेम टू सेम चीज. उसको हमने किया क्या? उसको हमने सिंपल सा ये किया, हमने सिर्फ एक पिवट एक्सटेंशन लिया और हमने इसको, इसी को रेफरेंस बना दिया. राइट? अब अगर आपको एक चीज दिख रही होगी, कैंडल पैटर्न समथिंग लाइक, ये एक ERS पैटर्न की तरह हो सकता है अगर आप अमालगमेट कर लो, अप डाउन डाउन. ये देखो, समथिंग लाइक दिस. ये मैंने आई गेस बहुत बार बताया भी है, फ्रेश सेलिंग जोन्स. ठीक है, इसको छोड़ दो, चलो इग्नोर दिस. नाउ सी एम पैटर्न और इसका फॉर्मेशन कितना ब्यूटीफुली आ रहा है. अगर आप बोलोगे कि चलो हम माइक्रो का आपने जो भी बोला, आई डो नॉट एग्री विद दैट. ठीक है, एग्रीड. मैक्रो पे देखते हैं. मैक्रो तो आपके पास पहले से था, राइट? वी हैड नॉट टच्ड दिस. बहुत 16 से भी पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, समवेयर अराउंड 9th और 11th ऑफ दिसंबर से आपके पास पड़ा हुआ है. लेट्स चेक ऑन मैक्रो देन. हैव अ लुक. ये देख, ये है मैक्रो का. ठीक है, 50 के नीचे जाने की कोशिश हो रही है. हैव अ लुक हियर नाउ. सेम थिंग जो अभी हमने डिस्कस की, बट है ना,
ऑन अ मैक्रो लेवल, माइक्रो नहीं मैक्रो, इधर से ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, अनेबल टू ब्रेक, इधर से होता क्या है, 2 वीक का रेजिस्टेंस बना के खड़ा हो जाता है, करेक्ट। या फिर अगर तो फाइन ट्यून करना चाहो तो इधर भी आप कर सकते हो, ऑल्दो दिस इज नॉट टच्ड, बट येट इट इज प्लेइंग एज ऑफ सच। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ इट इज मूविंग आफ्टर दैट, राइट। इधर से सडनली एक आपको एक पुश मिलता है, इट अगेन ट्राइज टू गो बिलो 50, एक ऊपर की तरह झटका मिलता है, इधर से आपको बायस लेवल भी ट्रिगर मारते हैं ऊपर की तरफ, कोशिश यही थी इसको फिल करने। अगर हम इसको थोड़ा फाइन ट्यून कर लेना तो आपको समझ आ जाए क्या स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश हो रहा है इधर। ये देखो, जो कि टच हो ही नहीं पाया। उसके बाद यू सी एम टाइप पैटर्न, दिस थिंग जो इधर आके ट्रिगर होता है, वाई, अंडरस्टैंड दिस। ये आपका नेकलाइन बनता है, योर वीकली पिवोट अलोंग साइड योर जीपीजेड ट्रिगर, फर्स्ट। सेकेंड, इधर मेरा जो रेफरेंस रेफरेंस चार्ट का बायर लेवल है, दैट इज समवेयर एट अराउंड 24,611। मैक्रो पे वो सेम चीज हमारी क्या कहाँ पे आ रही है, मार्क कर लेते हैं, 24,717, याद है ना सबको, राइट। कहीं इधर आ रही है, आई विल डिलीट दिस पर्टिकुलर थिंग, नाउ चेक। अगर आप देखेंगे मैक्रो के हिसाब से, ये जब भी ऊपर जा रहा है सस्टेन ही नहीं हो रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है सस्टेन नहीं हो रहा है, राइट। एंड इधर तो एक कंफर्मेशन के साथ था, ये नेकलाइन टूटा, इसके बाद एक रीटेस्ट है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर रेंज, फर्स्ट। सेकेंड क्या होता, सेकेंड बेसिकली जो मेरा स्टॉपेज एरिया था वो था दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये रेंज जो आपको अभी एग्जैक्टली फुलफिल होते दिख रही है। एंड चेक द ब्यूटिफुल कॉन्फ्लुएंसेस, कल इसने DL4 के नीचे ही फर्स्ट कैंडल का ओपन दिया और सेकेंड कैंडल से DL4 के नीचे ही रहा है विद कंटिन्यूस सेलिंग। आज देखिए क्या हो रहा है, DL4 को प्रोटेक्ट करके मदर कैंडल बना के बैठे। कल अगर आप देखेंगे आपको कहीं पे भी ये सिनेरियो नजर नहीं आ रहा, स्मूथ 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 सेलिंग गोइंग ऑन। टुडे अप डाउन, बेस डाउन, और उसके बाद एक मदर कैंडल आ रहा है। अंडरस्टैंड वाई, अंडरस्टैंड हाउ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसका सारा एक्सप्लेनेशन आपके पास अब है मेरे ख्याल से, राइट। डबल इंटेंसिफाइड सेलिंग हो जाती है अगर ये इसके नीचे चला जाएगा तो, राइट। ये पूरा का पूरा इंटेंसिफाई हो जाएगा इफ यू आर ब्रेकिंग 24,120। अदरवाइज ये रेंज के अंदर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, वी आर रेंज बाउंड, ये पूरे के पूरे रेंज, कौन सा, 24,610 टू, नॉर्मली 500 पॉइंट्स के रेंज में हम रेंज बाउंड रहेंगे बेसिकली। इसके ऊपर और इसके नीचे ही कुछ आपको मिल सकता है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन इवन गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स। दैट इज व्हाई आई सेड, जब मैंने आपको रेफरेंस भेजा था, आप डिस्कशन रूम में जाके चेक कीजिए डेट, राइट। इफ आई जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट डेट ऑफ रेफरेंस, जस्ट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स, ये देखो, वी हैव सेंट अ रेफरेंस चार्ट ऑन 9th of December, टाइम स्टैंड्स एट 3:05 PM। जब ये रेफरेंस हमने भेजा था, अब उस टाइम स्टैम्प पे जाके वीसी को ऑब्जर्व करोगे, वी सेड कि अब जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते, या तो ऊपर का टारगेट नहीं आया या तो नीचे का टारगेट नहीं आया, ये लेवल्स तब तक वैलिड रहेंगे। मतलब ये लेवल्स तब तक वैलिड होंगे, ये रेंज तब तक वैलिड है जब तक या तो ये ऊपर ना चला जाए ब्रेक करके, या तो फिर नीचे ना आ जाए ब्रेक करके, राइट। तो things are gonna stay the same. You cannot expect something exceptional from the market. वो हो ही नहीं सकता है। अब the secret sauce which gave me a, you can say, a very very strong presence of this thing getting confirmed
is one thing which I told you to keep a check on alongside the indices. Can any one of you remember or recall it, or if you remember that particular thing? The secret player in this particular move, ये जो move आया ना उसका एक secret player है, which added a very very good you can say confirmation to these particular kind of things happening. कोई बता सकता है क्या है? मैंने specifically pinpoint किया था alongside indices. Anyone? So consolidation in 2 days and then breaking out. That one only. No, no, not pattern. A value. एक hint देता हूँ, एक value है. A value, a number alongside indices. You have to check that. No. Very important. अच्छा एक अब तो straight away hint हो जाएगा. That value directly correlates with the buying and selling patterns of your broader market participants. That is FIDIs. Now it should hit you. No, Advanced declines. no, no. Recall. सोचो. We discussed in 9th and 11th of December. हाँ बोलो बोलो. YH4 yearly H4. No. We had discussed कि आपको ये वैल्यू देख के रखनी है alongside indices to see if DIS का जो फ्लो है वो स्पेसिफिक चल रहा है या फिर FIs are returning with a stable flow. This value can help you in that. One value which you see alongside indices, which is also very important for your option premiums. अब तो आपको बहुत क्लियर कट हो जाना चाहिए. एक ही तो वैल्यू है. ऑप्शन प्रीमियम के लिए आप क्या देखते हो? एग्जैक्टली राइट. इंडिया विक्स. इसका मोमेंटम ऑब्जर्व करो जरा. एक चीज अगर आप देखेंगे मार्केट के लास्ट 15 मिनट्स में 16th ऑफ दिसंबर, करेक्ट, इधर कहीं पे था इंडिया विक्स. एक चीज देखो, ये पैटर्न, ठीक है, दिस पैटर्न, ऑल्दो पिवट चार्ट के हिसाब से देखो तो ये तो ब्रेक ऑफ जीपीजेड है, एक्चुअल में जीपीजेड है बट ब्रेक ऑफ जीपीजेड है. But if you leave this particular thing, but if you just see this thing on a correlation with 16th of December, 16th of December देखिए इसका पैटर्न क्या चल रहा है. मार्केट नीचे आ रहा है, विक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है. मार्केट नीचे कितना आया? नॉट इवन. इफ आई जस्ट कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग, एक नॉर्मल सा प्रोपोर्शन पकड़े तो प्रीवियस रेंज का मार्केट ने हार्डली 25% भी कवर नहीं किया. हार्डली. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कल का रेंज है 100 पॉइंट्स का, ठीक है, मतलब जो आप आज के टाइम में कंसिडर कर रहे हो एज योर हाई एंड लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, अगर वो 100 पॉइंट्स का रेंज है, हार्डली मार्केट ने उसके अंदर 25 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है. बट इफ यू जस्ट गो एंड चेक द विक्स, कहां से वो कहां गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई टोल्ड यू अगर वो 13 के आजू बाजू रहेगा, then there are good chances कि FIIs will return to the market in a consistent flow of you can say inflows, basically inflows, if you remember, right? And you exactly check what is happening there. मैं 13 को mark कर देता हूँ somewhere down the line here. Here is 13, correct? ये देखो bottom chart में, right from around October. जब भी 13 के पास विक्स आ रहा है, इट इज ट्राइंग टू जंप ऑफ. उसके रिजल्ट मार्केट में क्या दिख रहा है, दैट इज सेकेंडरी थिंग टू डिस्कस, बट मच मोर इम्पोर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर थिंग. मार्केट ने हार्डली दिया है जंप ऑफ 25% इन द रेंज. विक्स डिड नॉट कूल ऑफ फॉर अ सिंगल बीट like point of time.
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट बी अटेंटिव फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको आगे काम आए, आपके डिस्पोजल में काम आए पता नहीं, बट दिस वाज वेरी इंडिकेटिव ऑफ वन सच फैक्टर which was observe the movement of this particular thing. O equals to L की opening है somewhat around. VIX is almost 11% for the day. 11% for a movement in the market of hardly 25% of the previous range. This is what also gives you an identification of something which is going on at the backdrop. आप खुद ही सोचिए, 100 पॉइंट का रेंज है, मार्केट ने अभी मूवमेंट भी नहीं दिखाया है, मार्केट आपका लेट्स से इंटेंसिफाई भी नहीं हुआ है, एक रेंज कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, एंड विक्स इज शूटिंग अप टू 11-12% फॉर द डे. समथिंग इज नॉट राइट, यस, समथिंग इज ऑफ द ट्रैक, एंड दिस इज हैपनिंग. देखिए, ये अगर चीज हो रही होती व्हेन पुराने टाइम पे जहां पे इंडाइसेस वर नॉट इन सिंक, हो सकता था निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी चढ़ रहा है, we can assume कि yes, बैंक निफ्टी is an outperformer compared to निफ्टी, broader index को outperform कर रहा है, तो it can just take that particular lead, correct? But when the reason for me putting across that particular chart with previous 2 week high as a reference was all which I told you right now, correct? उसका पूरा I tried to explain that in the simplest manner possible. जितना डीप जा सकते थे उसमें उतना मैं जाके आपको समझाया, राइट? बट अगर आप इस चीज को देखो, दिस थिंग टेल्स यू अ पर्टिकुलर स्टोरी. इवन एट द एंड ऑफ द डे इफ यू सी, क्लोजिंग पे भी अगर आप देखेंगे, इट इज स्टिल 8% हाई. अब आप पूछोगे कि क्यों, मैं क्यों मानूं कि विक्स 8% हाई है एंड इट कैन हैव सम कोरिलेशन. उसका अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो हैव अ लुक. दिस इज व्हाट माय प्रीवियस डे का पिवट एक्सटेंशन. माय सेलर, अगर मैं इसको एक बेसिक फॉर्मेशन में देखूं, इट इज क्लोजिंग अबव बायर्स लेवल. ठीक है, मेरा विक्स कूल ऑफ होना चाहिए इस टाइम पे. स्पेसिफिकली आई शुड हैव अ कूल्ड ऑफ विक्स, राइट? बेसिकली जो मेरे प्रीवियस लेवल्स थे, अगर मैं इसको ट्वेल्थ दिसंबर पे देखूं, 12 दिसंबर पे आप इसका रेंज देखिए. 12 दिसंबर को आप देखिए, एक ही कैंडल में बैठा हुआ, और 12 दिसंबर का आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है. 13 दिसंबर को मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर भाग जाता है. विक्स का मूवमेंट देखिए, ऊपर जाके पूरा कूल ऑफ होगा. व्हाट इज हैपनिंग द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे दिस थिंग इज हार्डली शूटिंग. इफ अगर मैं इसको भी मार्क करके दिखाऊंगा, ये इसका ओआरबी है, ओआरबी को भी नहीं तोड़ा, उसके अंदर ही गया. बट यू सी व्हाट विक्स इज डूइंग. It means someone might have bought the OTM options. See, I'm not very good with options. I would like to admit that yet again. I'm working on it. But इतना तो देख के मैं कह सकता हूँ कि someone or some other bigger player has bought bulk में, उसने OTMs उठाए, बल्क में OTMs उठाए. बिकॉज अगर इन द मनी एट द मनी होता, आपको मार्केट में वो चीज सिंक में आते हुए दिखती. प्रीमियम्स आपको विक्स इतना ऊपर नहीं, मार्केट इतना कंसोलिडेशन में नहीं दिखता. एंड दिस इज ब्रॉडर मार्केट, नॉट कोई आलू चालू इंडेक्स. दिस इज द ब्रॉडर मार्केट विच द होल मार्केट सीज. टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर, you can say, segment. And if that is stating me a close above buyer level, why is my VIX so high? And alongside that, a pattern which is almost forming like a double top. निफ्टी में तो फिर भी नहीं दिख रहा था, बट यू, हाउ कैन यू डिनाई दिस पर्टिकुलर थिंग? तो इसको तो छोड़ दो, नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस हियर, बट दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ कैन यू डिनाई दिस? राइट, अ परफेक्ट मतलब, अगर आप इसको छोड़ भी देना, चलिए इसका अगर हम रैली वैली सब हटा देते हैं, लेट्स से मार्केट ओपन होते हैं ऐसे नहीं जाता, बट ऊपर की तरफ चला जाता है,
ठीक है, that might have uh, like gone in my favor only because we were expecting that particular thing to rally off. But हुआ क्या? Everything changed in a mere fraction of seconds when I saw the closing. क्लोजिंग पे वो चीज हर इंडेक्सेस पे वो कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है या एटलीस्ट डबल टॉप बना रहा है alongside my VIX, alongside my pivot extensions, alongside my microstructure, macrostructure, सब चीजों में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही थी and that is why I messaged at the very last minute. Actually, it was done by signs were there after 3 p.m. but it was not so sure because आप देखिए अगर मैं ये कैंडल दिखाऊं ये थ्री अराउंड 2:30 को खत्म होता है ये चालू होता है फ्रॉम 2:30 टू 2:45 इसके बाद एक कंफर्मेशन आना शुरू हुआ right after 3 and more stronger after 3:15 p.m. so last के 10 15 20 मिनट आपको बहुत कुछ बता के गए थे मार्केट में एंड that is what I said कि अगर इनकेस डाउनफॉल आता है देन ऑल्सो वो एक बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट करोगे आप वाई एक बड़ा गैप डाउन नहीं हो सकता बिकॉज जीपीजेड है दैट्स द ब्यूटी ऑफ जीपीजेड एंड यू सी हाउ ब्यूटिफुली दे हैव फॉलोड दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल अब मोमेंटम देखिए इसका ये देखिए नेक लाइन इज कमिंग नियर टू टीसी रिजेक्शन फ्रॉम 75 अगर आपको याद हो लेवल तो राइट निफ्टी में सेम चीज है बैंक निफ्टी में सेम सेम लेवल्स से रिजेक्ट हो रहा होगा वो मोर ओवर इफ यू सी break break of BC retest and then break here either तो यार it's a clear cut you can say clear cut go ahead to sell for that particular day and even continue going further right even bank nifty would have done the same जो मैंने निफ्टी में बताया वही बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो आपको सेम चीज बैंक निफ्टी में मिलेगी समवेयर एट दिस पर्टिकुलर जोन ओनली यू विल फाइंड some additional flux volume setting up volume spikes and outflux influx hitting up same scenarios so this is how simple was the analysis but ये simple इसलिए दिख रहा है because आप एक लूप में थे अगर आप रैंडम दिन पे आओ और आप मार्केट को ऊपर नीचे करना चाहो अब नहीं होगा वो बिकॉज वीकली ऑप्शंस आर गॉन मंथली ऑप्शंस में आपके लॉट साइज ही इतने महंगे हैं योर प्रीमियम्स आर सो कॉस्टलियर दैट half of the people might have exited the markets. Basically, option trading को छोड़ दिया होगा. Those who have less capital, because it's not possible. Understand? Possible ही नहीं आप इतने high premium पे trade करो और ऐसा move आए. ऐसा move आएगा, you are bound to lose your capital. Not even stop losses, you are bound to lose your capital. Because इतना faster decay होगा कि you will not be able to manage your position itself. Correct? And that on the hindsight, it even puts you into a dilemma that whether I should close my position or not. Seeing these kind of moves, should I close my positions or not? Right. So these are all a part and parcel of what is happening on a broader structure. So अगर आपको अब broader structure clear है, तो then it's a very very good thing for me as well, right? Because it shows that जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था मल्टीपल वीसीज में उसका कंक्लूजन आज मैंने आपको देने का कोशिश इधर किया है राइट एंड दिस वीसी कैन बी रेफर्ड अगेन एज वेल इसको एक बार और देखना है तो एक बार और देख लीजिएगा बट प्लीज डू कीप अ लूप ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन दी ब्रॉडर पिक्चर एज वेल तो जो आपको मैसेजेस हैं डिस्कशन रूम में जो हमने बातें अभी की हैं वो सारी इधर एप्लीकेबल रहेंगी करेक्ट सो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर यार और एक बात अगर आप अब इसमें एक वीकली आप बोलो पिवट ट्रेल देखना चाहो आप देखिए इधर डाउन था इधर अप है इधर अप है सो दिस इज अ पॉसिबल एरिया वेयर थिंग्स माइट हैव गॉन अप एंड यू सी दैट एग्जैक्ट थिंग्स हैपनिंग ठीक है उसका हमने माइक्रो स्ट्रक्चर डिस्कस किया कैसे क्यों हाउ व्हेन व्हाई सब उसमें कवर अप हो गया अब एक और अगर आपको कॉन्फिडेंस लगाना है तो ये भी एक ऐसा जोन है हालांकि बहुत छोटा जोन है बट फिर भी
according to our pivot trails का concept, this zone also stands for a particular significance because अगर इसके नीचे जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में अगर आप वो सेम चीज देखोगे तो वही सेम चीज आपको समवेयर और द अदर आपको Screen is बैंक not निफ्टी में भी visible. देखने मिल तो भाई आपका आवाज भी गया था 5 मिनट. अभी Now okay. 5 मिनट चला गया था आवाज नहीं 2-3 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए गया था. Lost you for 2-3 minutes. Now screen not visible. The screen is visible, but audio is not there. Yes, screen is visible. Yeah, guys, am I audible now? Yes, Mukul bhai. Sorry, I guess there was a power cut due to which Wi-Fi got terminated. Our session also got terminated due to poor connection. I hope the recording is saved. Okay, ठीक है. तो just closing on a closing note, I would just referring to this can also be considered as a good zone according to our pivot trail concept because this is down. This week was down. This week is up, correct? And this week was also up. So this level can also add as a good confidence for our further studies as well. Correct. Then going with बैंक निफ्टी देखिए ये तो था निफ्टी का which was in sync with the pivot trail concept but निफ्टी बैंक में क्या हुआ था निफ्टी बैंक में if you just observe निफ्टी बैंक or bank nifty whatever you want to like call it bank nifty you see what the same thing if we just check on बैंक निफ्टी में वो एग्जैक्ट चीज रिवर्स फॉर्म में रही थी कैसे down up down so this itself you can say negates the particular point of conjuncture here but one thing to observe in bank nifties देखिए निफ्टी में आपने पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर दिया जस्ट गिव मी कंफर्मेशन if you're listening to me right we are not terminated from the sessions right just give me a quick Yeah. confirmation Yes, yes. okay perfect cool so देखिए
निफ्टी में इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बैंक निफ्टी में अभी वो चीज शुरू हुई, अगर आप देखें डाउन, ये देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज डाउन अप अप. Now, if you remember, we had discussed this particular thing as well in the webinars also, and in this particular thing. ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए टू कंसिडर itself as a potential reversal zone or something like that. ठीक है, बैंक निफ्टी में हालांकि अभी बहुत नीचे के गैप भी बाकी है, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो लाइक देयर टू गेट फुलफिल्ड. That is why I was saying this was also one of the reasons which could have been a reason for stating out these sellers to be very very strong. Because Nifty में कहीं ऐसा कोई अब गैप बचा नहीं है जहाँ पे वो फुलफिलमेंट कर पाए. The only thing is they can just do follow up selling in the heavyweights down. होगा क्या? बैंक निफ्टी और निफ्टी को सिंक बनाने की क्या करेंगे? निफ्टी तो वैसे भी इट कैन नॉट लाइक सस्टेन डाउन. वो क्या करेंगे? HDFC, SBI and Reliance, इन तीन को रोटेट करते रहेंगे. How? They will rotate the heavyweights on the downside and keep some of the other indices on the upside. That would result in Bank Nifty getting that additional push downside to complete its gap if it wants to. नीचे का gap complete करेगा. Meanwhile, Nifty will tend to remain stable. What I'm trying to tell, chances are we can again go out of proportion comparing Nifty and Bank Nifty, where Nifty will try to become stronger and Bank Nifty will try to become weaker for a quite short point of time. Okay, so that scenario can also not be ruled out seeing these particular structures. But इतना तो confirm था कि इसको अगर break करता है, then we are seeing, and you see how beautiful is the structure forming out here. हमने निफ्टी में पैटर्न देखा था, एक मदर कैंडल बन के फिर ऐसा हो रहा था. बट इवन इफ यू जस्ट सी इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये एक मदर कैंडल बना है, आप देखिए फंड फ्लक्स पे जाएंगे तो आपको उसका रेलेवेंस मिल जाएगा. ये एरिया पे आपको फंड फ्लक्स का आएगा. Here we are seeing a mother candle. What I am telling you here is something like this. And उसके बाद आप देखिए कहीं अंदर ही, उसी के अंदर you are seeing a double top thing and then break off. And through pivot trails concept, have a look here. ऊपर जाने का कोशिश हुआ है. This is something like a false option on pivot trails. ऊपर जाने का कोशिश हुआ है, but a beautiful double top pattern and down. So I hope this thing is very clear. And you see also why I was telling of this particular scenario to go disproportionate. बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो DL4 के नीचे, निफ्टी का क्लोजिंग देखो कहाँ पे है, DL4 के ऊपर प्रोटेक्टिंग DL4. मिड कैप निफ्टी विच वाज स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल, वो तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा. इसने तो WL4 भी नहीं तोड़ा है, करेक्ट, एंड DL4 भी आज सस्टेन मारा है. एंड नाउ यू सी लास्ट इज फिन निफ्टी. Fin Nifty below DL4, obviously following the footsteps of Bank Nifty. So now if I ask you a basic question, उसका आंसर आप मुझे डिस्कशन रूम में दे देना. Which is the strongest index right now and which is the weakest index right now? Right, according to all these particular study, current market. So that would be just a question for everyone. And I hope this sums up the today's session as well. इतना आज के लिए काफी रहेगा. कल हम स्टॉक्स पिकअप कर लेंगे बिकॉज आपको मैंने एक फॉलोअप देना था. इंपॉर्टेंट था ये चीज समझाना, इसलिए मैंने आज एक VC लेके समझा दिया रादर देन मी पोस्टिंग चार्ट्स एंड टाइपिंग दोज लॉन्ग टेक्स्ट. ये आपके पास एक अच्छे खासे रेफरेंस के तौर पे भी रहेगा रिकॉर्डेड. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर टुडे एंड यू गॉट सम आइडिया कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है. करेक्ट? इज इट फाइन गाइस? यू कैन हियर मी? Yeah, thank yes, Mukul. चलो परफेक्ट देन. तो मिलते हैं फिर कल. श्योर एनी टाइम. ठीक है, फिर मिलते हैं कल एंड लेट्स डिस्कस फॉर EA स्टॉक्स एज वेल. कल हम इसके बारे में उठाते हैं, कल या परसों जब भी टाइम मिले हम उठाएंगे EA स्टॉक्स. करेक्ट, कैसे चली है, कहाँ चली है, किस फॉर्मेट में गया है, कैसे गया है, एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉर्ट एज वेल.
right? Okay. So cool. Have a great day. Bye bye, everyone. Bye. Bye Okay, bye. thank you. Thanks a lot, Thank Mukul. you. Bye. Anytime, welcome.